विजिबल, स्क्रीन विजिबल है? Okay, so in yesterday's class, what we saw is we create this customer analysis page, right? We use different attributes to compare the order quantity and the revenue. Now we complete with the customer analysis page. Let's understand how we can analyze the product. So in the next page, this page is for the product analysis. So we'll rename this page as a product analysis. Let's create some KPIs first. For the KPI purpose, we can use Gauss chart, right? So in order to show the KPI, what kind of a charts we use card visuals, multi-card visuals, KPI visuals, and Gauss chart visuals. Those can be used as a KPIs. So for this product analysis, we will going to use the Gauss chart as a KPI. Okay. So firstly, I wanted to uh, analyze what is my monthly order quantity and what is my target. So Gauss chart, why we use Gauss chart? Gauss chart is for the specifically what is or to track your progress towards your target. That's why we use Gauss charts, right? So in the Gauss chart, first thing I need to have the value for the total order quantity. So we already created one measure for the total order quantity, and the next one is for the target value. We have this target value. For the target purpose, I am putting some values, creating some calculation. Let's say we already created a previous month order quantity, right? So let's say I wanted a target kind of a thing, that whatever the previous month order quantity is there, I want a 10% increase in that, and that is my target. Okay, understood? So whatever the previous month order quantity is there, I'm just adding a 10% in that, and this is my target. So how can we add a 10% in the target? Let's say Excel. Let's say I'm having product A, and उसका जो मेरा प्राइस है, से प्राइस, लेट्स से उसकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है, वो ऑर्डर क्वांटिटी है उसकी, लेट्स से 100. If I increase this order quantity by 10%, what will be the output? 10% increase. Okay, so अगर 10% इंक्रीज किया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 100 का 10% कितना है? 10, राइट? सो 10% इंक्रीज करके 100 प्लस 10, 110, राइट? So I am multiplying this 100 by 1.1. Why 1.1? Because I wanted to add 10%. How this 1.1 appear? Let's say in normal calculations, what we are going to do first, we just uh, divide this 100 by 10, right? In order to calculate 10% of the 100, and then afterwards what we are going to do, हम 1 को प्लस करेंगे, राइट? That means 100 को प्लस करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से, then we got the 110. So in the so instead of writing this way, I am writing
this way, 1.1. Okay, so this means I am increasing 10% in 100. इसका मतलब ये होता है. So that's why we get the same answer in both the cases. Instead of writing this way, 100 plus 100 by 10, I'm adding this way, 100 multiplied by 1.1. Okay, 20% है तो 1.2. Okay, so let's say in the God chart, so this is your God chart. In order to create the target for this, I'm creating a new measure. Let's say my new measure is for order quantity target. I'm putting the name for this visual is order quantity target. Order quantity target is equal to, I'm saying calculate. What needs to be calculated? Previous month order quantity multiply by 1.1. Okay, so this is my target. So now we have the target, we have the order quantity for the current month. Let's put this in a value section as order quantity, and maximum or the target value will put in previous month target. Where is it? Previous month order quantity. No, in the target we put in this order target. Okay. So now this God charts will showcase you overall, right? It's showing 129K and 84K is your target, right? So let's putting some filtrations. I'm putting year, month, category name also is there. Putting these three visualizations in the product analysis for the filtration purpose. Say don't sync. Let's say I'm selecting for 2015 and month is my, let's say, April. So what this chart is showing now, for the April month order quantity is 204 and my target is to 218. So not whatever the date is, उस डेट तक मैंने कितना अचीव किया उस मंथ में. So I'm achieving 204 and actual target was 218. So that's why we can showcase this as a whatever our progress towards our goal. That's why these God charts are used. जैसे हमने ऑर्डर क्वांटिटी का एनालिसिस किया, वी कैन सेम एनालिसिस फॉर द रेवेन्यू आल्सो एंड द रिटर्न क्वांटिटी आल्सो. Okay, so I'm just creating another measure for the revenue. Again, my measure for the revenue is same. I'm multiplying previous month revenue as a 10% increase. So I'll say revenue target is equal to, for this time I'm just, instead of using calculate, simply I'm also can use direct function, previous month order quantity multiply by 1.1. So this is also gives you a same reason. So not to use calculate over here because we are not applying any kind of filtrations. We simply do the multiplication. Let's copy this visual, paste it. Instead of total order quantity, I'm putting my revenue. In the value sections and in the target section, I'm putting my revenue target. Hello? बोल. हाँ.
Mm. 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 नाही ग तसं काही नसतं. नाही असं काही नाही, मे बी काल सायकल वगैरे चालू होईल की नाही. बरं झालं. हम्म. बरं. ठीक आहे. हॅलो. ठीक है, so I'm putting a revenue target over here. Target. So this is my target for the revenue. For the April months, my revenue will be 653.36K and my target will be 217.80. So I'm quite bit ahead of my target, achieving good. Again, those values 0 and 408, again 0.0 and 1.3 million, those values are based upon ATO values. So Power BI automatically calculate your target value and your current value, and based upon this it gives you a target. Say over here it values kind of a 0 and 408, but over here in this particular chart it is in like millions. So it will be automatically target, but if you wanted to give some your values, you can put in the minimum and maximum value sections over here. So that's why those sections are created. Okay, so this is for the revenue. Again, I will put creating a chart for the my return quantity. So I'm having return quantity. This is my return quantity, and I wanted to create a target for the return quantity. So creating a measure for this. It's a new measure. In the measure, I'm saying I'll say new measure. Return quantity is equal to. So I'm saying my previous month return quantity. We calculated return quantity for the previous month. Return quantity previous month multiplied by 1.1. I'm putting this target value into the return quantity section. Okay. So again over here for this particular analysis, we say that the target was 10 and achieve was 14. So but in case of return, we always prefer to return should be less, right? So for analyzing those gauge, it means let's say you are ahead of the target. It means you're not doing good. You need to below your target. So my target is 10% higher than the previous month. So I need to focus on my product quality in order to reduce this particular value 14. It might be less than 10. Okay. So that's what those three gauge charts showcasing us our targets and
whatever the achievements we did towards the target. So just simply give some name to this. Let's say instead of this total order quantity, I'll say order quantity quantity by month. This by revenue, revenue, and let's say this one return quantity by you can give any kind of a name based upon your understanding. Might be I can give the order quantity by order target or revenue by revenue target, return quantity by return target, kind of. So again, those colors I need to change. Let's say field color will be this one, and target will be this is fine. And just apply some borders, borders and make it on. Which would we use for the border? This one. Okay, and just format this with this with this. So one more putting where the country. Control Z से आप पीछे जा सकते हो. If you do any changes, then you can press Control Z. It will be again to your previous state. So putting this country over here. Fine. So next analysis I wanted to see is the uh, again a table or the matrix visual which showcases a product name and the order quantity for the same product and the return quantity also. Okay, let's understand that we can able to see that or not. So I'm giving this as a table visual, and in the table visuals I'm putting my product name, so product name, and also putting the order quantity.
quantity, and let's say I'm putting the return quantity also. Fine. So for each product, if there is anything written, it will be showcasing me like this. Okay. This. Okay. Which colors we take as a background? Say for this canvas background will be this color. So colors I'm putting over here for the background. Okay. Okay, fine. So the next analysis I wanted to do based upon my based upon any particular value or product price going to change. Based upon that change product price, how my revenue and my order quantity or my cost will be going to affect. Okay, so to understand this, just a little bit of adjustment. So for that analysis, in our modeling sections, we have this functions called new parameter. Okay, when I expand this new parameter, is having two options. First, understand this numeric parameter, and then we go for the analysis. So what is this new parameter? Parameter is nothing but a you create a kind of a slicers in order to fetch the slicer's value in your logic or in the calculation. So what it means, previously this new parameter is called as a what if parameter. Now it rename or change as a new parameter. So interviewer might be asking you about what if parameter. तो what if parameter भी सेम ही है न्यू पैरामीटर, क्योंकि ये नया नेम है, पुराना नेम what if parameter. पुराने केस में वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक रेंज का ऑप्शन होता था, बट अब नए केस में यहाँ पे फील्ड्स का ऑप्शन भी ऐड हुआ. Okay, so what is helpful for this? Let's say I'll go to this another page. Let's understand the numeric range. So firstly, let's say I'll select numeric range. When I do that, one pop-up window is appearing in front of me in order to put the values over here. So I'll just, this is the numeric range parameter. So you can change to the fields of numeric range. So this is the numeric range. This parameter's name is over there. So I'll just quickly say that, for example, let's say analyze by analysis, और जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ लास्ट ईयर, लेट्स से ओके लास्ट ईयर ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ. Then data type will be, firstly let's understand the requirement. Just cancel it. Firstly I'll just told you the requirement, what is the requirement. So now let's say we have the table visual. Let's create one table visuals, and in that table visuals we have, let's say, our you can say subcategory. Let's say subcategory, we have the subcategory.
and in the subcategory, let's say we have the order quantity, total order quantity, right? And I want to, अब जैसे let's say this order quantity bike racks, ये किस लिए है, ये overall उसकी order quantity 469. But if I wanted to compare this order quantity with my uh, previous month order quantity, let's say. So for example, just putting the slices for the, or I'm just putting the values also here. Example, I'm putting my here, and not from here. Summarize it, and I'm putting my month name also. Input month name also. So what this particular table showing me, it's showing for the bike racks 2016 July was 8. Okay, so either way we can remove the subcategory, it will unnecessary create a confusion. So in the simple charts, what it's showing me, January month के लिए मेरा order quantity कितना है, right? Now if I wanted a new column over here which compare its previous month order quantity, let's say. So हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम एक मेजर क्रिएट करेंगे प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी का, करेक्ट, जिसमें हमने डेट ऐड का जो फंक्शन यूज़ किया उसमें हमने -1 मंथ का इंटरवल वहाँ पे हार्ड कोड किया था, राइट? बट व्हाट इफ़ आई वांट समथिंग लाइक दैट कि वो जो -1 है वहाँ का हार्ड कोड किया हुआ, वो मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू जो कंपेयर करनी है वो प्रीवियस मंथ से करनी है, प्रीवियस 2 मंथ से करनी है, प्रीवियस 3 मंथ से करनी है, 4 मंथ से करनी है, 6 मंथ से करनी है, वट एवर. Let's say I wanted to compare this particular value with last 6 month itself. Let's say मैं नवंबर की वैल्यू जो है 1911 इसको लास्ट 6 मंथ के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ. So I want such a kind of a flexibility over here. So let's create one measure over here to understand this. We already created this measure, but I'll just create new measure for this. इसको नाम देते हैं previous month or selected month. ऐसा मैं इस मेजर को नाम दे. तो प्रीवियस मंथ का हमने कैलकुलेशन कैसे किया था, वी सिंपली से कैलकुलेट, वी से ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है हमें, ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, एंड वी से डेट ऐड, उसमें हमने कैलेंडर दिन का हमारा जो डेट है वो पास किया, देन वील पास -1 एज ए इंटरवल एंड इंटरवल विल बी मंथ, right? So this particular expression gives me a previous month order quantity, correct? If I drag this in this particular visual, what it giving me, it giving me 164 के लिए या this February month के लिए January month का order quantity मुझे दे रहा है. बट जब हमने ये लॉजिक लिखा, इस ऑर्डर क्वांटिटी को लिखा, यहाँ पे ये -1 क्या हुआ, हमने हार्ड कोड किया हुआ. अगर मुझे -2 करना रहेगा तो इस मेजर में आके मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? अगर मुझे लेट्स से -2 मंथ पीछे जाना है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी -2, राइट? सो ये जो एनालिसिस है इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइसर्स क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें वैल्यूज़ रहेंगी 1 2 3 4, एंड बेस अपॉन दैट सिलेक्शन में जो अगर 1 करता हूँ तो प्रीवियस मंथ का शो करेगा, 2 करता हूँ तो प्रीवियस 2 मंथ का, 3 करता हूँ तो प्रीवियस 3 मंथ का. इस विजुअल में वो चेंजेस या उस पर्टिकुलर मेजर में वो चेंजेस होने चाहिए डायनामिकली. दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड? सो फॉर दिस नाउ यू नो दैट कि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्लाइसर्स में रखना है, राइट? 1 2 3 4 -1 -2 वट एवर, या डेसिमल प्लेसेस को रखना है. सो दोज वैल्यूज बी सेट एज अ न्यूमेरिक वैल्यूज, राइट? सो दैट्स वाई in the
in the parameter sections you choose numeric range. आपको एक range चाहिए numeric की for the selection purpose. So when I select numeric range, यहाँ पे parameter का नाम आता है. let's say मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि इसको भी नाम देता हूँ मैं selected, और let's say last month, ऐसे नाम दे रहा हूँ. कुछ भी नाम दे सकते हो आप. Data type will be the whole number. Minimum and maximum value, let's say minimum will be 1 and maximum will be let's say 6. minimum -1 से लेके -6 तक. इंक्रीमेंट विल बी 1. इंक्रीमेंट 1 का मतलब 1 2 3 4. अगर इंक्रीमेंट 2 है तो क्या आएगा 1 3 5 लाइक दिस. सो इंक्रीमेंट वी कैन स्पेसिफाई ओवर हियर. एनी डिफॉल्ट वैल्यू यू वांटेड टू पुट इन द स्लाइसर. लेट्स से आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो स्लाइसर एक वैल्यू देगा डिफॉल्ट. सो लेट्स से मैं डिफॉल्ट में रखता हूँ 1. यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज. अगर ये चेक मार्क है तो एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा आपके पेज के ऊपर. ये हम ऑन ही रखेंगे क्योंकि वी वांट स्लाइसर्स. जब ये पैरामीटर क्रिएट होगा तो इस पैरामीटर के साथ एक मेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा एंड एक टेबल भी क्रिएट होगा, एक कॉलम भी क्रिएट होगा. क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्लाइसर विजुअल होता है, स्लाइसर विजुअल्स में हम कॉलम्स को पुट करते हैं, नॉट मेजर्स. तो अगर ये पर्टिकुलर पैरामीटर एक स्लाइसर क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो बैकएंड में एक कॉलम क्रिएट कर रहा है और उस कॉलम को वो स्लाइसर्स में यूज़ कर रहा है. प्लस न्यूमेरिक रेंज के कैलकुलेशन में एक मेजर भी क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली. जो मेजर व्हाटएवर आप वैल्यू सेलेक्ट करते हो स्लाइसर के अंदर, वो वैल्यू एज आउटपुट देता है यूजिंग सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन. वी गोइंग टू सी दिस. तो मैं यहाँ पे पैरामीटर को क्रिएट कर रहा हूँ. आई हिट ऑन क्रिएट. तो यू कैन सी यहाँ पे एक स्लाइसर क्रिएट हुआ है. ठीक है. और इसका मैं स्लाइसर सेटिंग में जाके लेट्स से आई डोंट सिंगल वैल्यू, जस्ट वर्टिकल लिस्ट, गिव मी वर्टिकल लिस्ट. राइट. सो जो हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दी थी एंड इंक्रीमेंट दिया था बेस अपॉन वी गॉट सम वैल्यूज. राइट. सो आधा काम यहाँ पे हमारा हो गया है कि हमारे पास एक स्लाइसर है सिलेक्शन के लिए. अगर मैं 1 सेलेक्ट करूँ तो ये पर्टिकुलर वैल्यू चेंज होनी चाहिए. बट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अभी तक कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज वी नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस येट टू आवर एग्जिस्टिंग मेजर. राइट. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेक करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये एक पैरामीटर क्रिएट हुआ. पैरामीटर एज ए सेंस टेबल क्रिएट हुआ बिकॉज दिस टेबल कंटेन अ कॉलम. ये पैरामीटर क्रिएट करने टाइम पे जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपने दी है उसका एक कॉलम क्रिएट हुआ है बैकएंड. इफ यू गोइंग टू सी दिस लास्ट मंथ, इट इज दिस वन. तो यहाँ पे देखो लास्ट मंथ नाम का एक कॉलम क्रिएट हुआ है जिसमें वो वैल्यूज है एंड इसने ये फंक्शन यूज किया है टू जनरेट दिस, जनरेट सीरीज फ्रॉम 1 to 6 and the default value will be 1. So that's what this means. Sorry, not the increment will be 1. Okay, so now we have this. Also when I drop down this, you see this is your column जो हमने अभी टेबल में देखा जो इस स्लाइसर में यूज हुआ है. राइट. दिस इज, अगर विजुअल को सेलेक्ट करते हो तो देखो ये स्लाइसर विजुअल है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है. इस स्लाइसर विजुअल में इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर का लास्ट मंथ का कॉलम एज अ यूज हुआ है पैरामीटर. एंड देन एक मेजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है ऑटो लास्ट मंथ वैल्यू. अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेजर है सेलेक्टेड वैल्यू लास्ट मंथ 1. दिस 1 विल बी द योर डिफॉल्ट वन जो आपने पास किया था. ठीक है. अगर इस मेजर को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो व्हाट इट गिव्स मी वन स्केलर वैल्यू बिकॉज मेजर गिव्स मी स्केलर वैल्यू. इसको मैं कार्ड में ले रहा हूँ. सो डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास की थी आपने 1. इफ यू सेलेक्ट 2 ओवर हियर, so see this measure gives you 2. If you select 3, if you 5, whatever you select in the slicers, this measure gives you that particular value as output. Okay, यहाँ तक clear है. This column and this measure. Now we know that कि अगर ये particular measure मुझे whatever I am selecting from this column उसका value दे रहा है तो why not I am using this measure
एज अ वैल्यू इन आवर लास्ट सेलेक्टेड मंथ का जो ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर था, उसमें इंस्टेड ऑफ दैट वन, why cannot put this slicers, this मेजर ओवर देयर. सो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा वो वैल्यू वहां पे वो लेगा इंस्टेड ऑफ दैट वन. तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर मेजर जो हम यहाँ पे सेलेक्टेड मंथ ऑर्डर क्वांटिटी के केस में जो हमने बनाया है, राइट. सो आई एम सेइंग यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे वेरिएबल इज सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू value from the that particular measure. क्या नाम है इसका, लास्ट मंथ वैल्यू. You see, this is the measure from the last month table. Say last month value is my measure, and I'm saying this is my variable result equal to, this is my previous month का calculation है. So instead of this one, what I'm saying is you give this variable selected value. Selected value, that variable. यहाँ पे ये -1 ये जो है मैं ऐसे रख रहा हूँ. ओके. And if you create the variable, in order to create the result you need to place return. क्या रिटर्न करना है हमें, रिजल्ट से इंटर. नाउ इफ यू सी ये मेजर चेंज हुआ. हमारा सिलेक्शन 5 पे था, तो 184 जून के लिए उसने जनवरी का दिया है वैल्यूज. लेट्स से मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रीवियस मंथ का है, 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रीवियस 2 मंथ का कंपेयर कर रहा है, 3 कर रहा हूँ तो 3 मंथ, 6 कर रहा हूँ तो 6 मंथ. सो based upon that selections I'm controlling behavior of my measures. So this is one of a use case for this particular numeric range parameter. Another use case that we are going to see over here is we are going to create one range of a product price, जितना डिस्काउंट हमें देना है. लेट्स से मुझे 10% इंक्रीज करना है, 10% डिक्रीज करना है. So that kind of a slicers we are going to create, and then we do the analysis कि अगर मैं 10% increase करता हूँ तो how my revenue will be affected, how my cost will be affected, and my profit will be affected. That analysis we can do. So firstly, you understand this numeric range. Let's understand this another part also in the parameter. We will understand this page in the next lecture, but let's complete this particular part first. So again, in the modeling section, uh, we understand this numeric range. Let's understand the fields. Now let's say I'm having this A1 visual है मेरे पास, एक विजुअल है. इस विजुअल में लेट्स से मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज, कैटेगरी नेम एंड ऑर्डर क्वांटिटी. दिस पर्टिकुलर विजुअल में मैं एनालाइज क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी. आई एम हैविंग सिमिलर विजुअल, but instead of order quantity what I am analyzing is let's say revenue. ठीक है. एक विजुअल में मैं ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में मेरे पास ऑर्डर कैटेगरी है, दूसरे विजुअल में भी मेरे पास कैटेगरी ही है एक्स एक्सिस में, बट वाई एक्सिस चेंज है जिसमें कैटेगरी नेम है. सो
यहाँ पे अगर मैं कोई एक स्लाइसर सिलेक्शंस पुट करके, जैसे मैं लेट्स से यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर क्रिएट कर दिया एनालाइज बाय नाम का, और उसमें मैंने पुट कर दिया रेवेन्यू एंड लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं रेवेन्यू को क्लिक करता हूँ तो मेरा ये विजुअल जो है मुझे कैटेगरी वाइज रेवेन्यू दिखाएगा, एंड इफ आई क्लिक ऑन द ऑर्डर क्वांटिटी सेम विजुअल मुझे रेवेन्यू बाय क्वांटिटी दिखाएगा। सो हम मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे मैं स्पेस सेव करता हूँ, राइट। सिनारियो समझ में आया? सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू विजुअल इन द सेम विजुअल्स आई कैन अचीव दिस टू। कैसे? लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू पैरामीटर में गया एंड से फील्ड्स, दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग फील्ड्स। पैरामीटर का नाम मैं दे रहा हूँ एनालाइज बाय, ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं इसको। नाउ वट एवर कॉलम्स मेजर्स जो भी आप यहाँ पे क्रिएट किया हो आपके पास वहाँ पे सिलेक्शन का लिस्ट आएगा। वट आई वॉन्टेड इज, मेरे पास एक्स एक्सिस स्ट्रीम है बट फील्ड पैरामीटर को यूज़ करने के लिए आपको एक्सिस सेम आना ज़रूरी है, बट दैट आल्सो कैन बी अचीव। लेट्स सी, अभी के लिए हम एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू है एंड वी हैव द ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। ये दो एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने दो मेजर्स को सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं और एक सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आंसर। मैंने तीन मेजर्स को सेलेक्ट कर लिया। अगेन आई एम सेइंग दिस ऐड अ स्लाइसर टू दिस पेज, आई विल से क्रिएट, ठीक है। एनालाइज बाय का जो बैकएंड में मेजर क्रिएट हुआ है दिस इज वन, इट्स सेइंग मेरे पास रेवेन्यू नाम का एक जो स्लाइसर्स आपका क्रिएट हुआ है ना, उस स्लाइसर के पीछे ये लॉजिक है कि उसने रेवेन्यू नाम दिया है। ये कहाँ से आई हुई है फील्ड, ये कैलकुलेशन जो आपने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे उसके अंदर का जो रेवेन्यू मेजर है उसने उसको रेवेन्यू एज ए नाम दे दिया है, उसको नंबरिंग दिया है 0 1 2 काइंड ऑफ सेम फॉर ऑर्डर क्वांटिटी सेम फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे देखो ये एक मेजर क्रिएट हुआ है, सॉरी एक स्लाइसर क्रिएट हुआ है। एंड इफ आई सी दिस पर्टिकुलर टेबल एनालाइज बाय इन अ टेबल व्यू, से दिस इज माय एनालाइज बाय, यू कैन सी दिस, ये टेबल क्रिएट हुआ। एनालाइज बाय में जो आपने नाम दिए हुए हैं ना, एक्सपांड दिस, देखो यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हुआ है। एनालाइज बाय नाम का एक ये पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट हुआ जो स्लाइसर्स में आया, उसके साथ ये तीन ऑल कॉलम क्रिएट हुए हैं बट वो हाइडिंग स्टेज पे है, ये बैकएंड में इसको सपोर्ट कर। क्या क्रिएट हुआ है, दिस इज द ये रेवेन्यू टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट जो नाम यहाँ पे दिए, यू कैन चेंज दिस नेम। जैसे मैं इसको इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू आई वांटेड टू से टोटल रेवेन्यू, आई कैन डू दिस। देखो यहाँ पे एनालाइज बाय में भी वो चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू। तो ये एनालाइज बाय फील्ड कहाँ से रेफर कर रही है, उसका नंबरिंग एंड उसका नाम यहाँ पे है। उसको एक उसने ऑर्डर क्रिएट किया है कि ये 0 1 2 जो ऑर्डर है तो स्पेसिफिकली ये रेवेन्यू एक नंबर जीरो मतलब टॉप पे दिखेगा, उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी दिखेगा, उसके बाद प्रॉफिट दिखेगा, काइंड ऑफ एक ऑर्डर है, राइट। नाउ वी हैव दिस मेजर विथ अस टोटल रेवेन्यू टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, बट अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर विजुअल को कॉपी करके लेता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस वाई एक्सिस में ऑर्डर क्वांटिटी को व्हाट आई गोइंग टू पुट इज आई पुटिंग दिस एनालाइज बाय। नाउ यू सी मैंने एनालाइज बाय का जो टेबल है उसके अंदर का जो एक कॉलम है एनालाइज बाय उसको यहाँ पे वाई एक्सिस में पुट किया, एंड एनालाइज बाय का स्लाइसर जो मेरे पास है। नाउ इफ आई एम सेइंग दिस एनालाइज बाय टोटल रेवेन्यू, this will be say category by total revenue. If I say order quantity, this chart will be changed, it's showing category name by total order quantity, and if I say profit, it will be showing based upon the profit. So the same visuals you can use for three different analysis instead of creating three different visuals for the same. Okay, so that's what this parameter is going to do. जैसे मैंने यहाँ पे y axis में ये चीज़ें डाली है, जैसे मुझे यहाँ पे एक फिजिबिलिटी ऐसी भी चाहिए कि मैं ये जो कैटेगरी नेम है ना एक्स एक्सिस उसको भी मुझे चेंज करना है। सो आई कैन क्रिएट वन मोर पैरामीटर फॉर द एक्स एक्सिस एंड पुटिंग इंस्टेड ऑफ दिस कैटेगरी नेम आई एम पुटिंग दैट पैरामीटर ओवर हियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक पैरामीटर चेक कर रहा हूँ, लेट्स से उसको नाम देते हैं, इसको नाम देंगे अपन
एक्स एक्सिस, एंड इसमें मैं लेट्स से फील्ड ले रहा हूँ मेरे, इसमें हम एट्रीब्यूट लेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल कस्टमर डीम से मैं कस्टमर डीम, प्रोडक्ट है मेरा, सब कैटेगरी से मैं लेट्स से सब कैटेगरी नेम ले रहा हूँ, एंड लेट्स से मैं टेरिटरी डीम से मैं कंट्री ले रहा हूँ, एंड कैटेगरी डीम से मैं कैटेगरी ले रहा हूँ। सो मेरे पास तीन है, राइट। सब कैटेगरी, कंट्री एंड, ठीक है। So I can say create this particular field parameter, saying create, okay, so it is created, fine, and this particular x axis में यहाँ पे रख दिया, ठीक है। So in the same visual, instead of putting this category name alone, what I am putting is my x axis के अंदर का जो this particular value I am putting over here. Now what it's showing, let's say मैं country को select कर रहा हूँ तो country wise profit show कर रहा है, right। You selecting x axis as a country, y axis as a profit, so it will be showing you a country wise profit. I wanted to see, let's say, country wise total revenue, so I can select the total revenue, you see country wise total revenue. Let's say I wanted to see category name by profit, so you can choose x axis and y axis based upon your slicer selections. The visual will be showcasing this informations to you. Understood? So this is what this what if parameter is used for, or new parameter is used for. Understood? समझ में आई? Okay, so using the same concept, we are going to analyze this product analysis or creating this product analysis in the next lecture. Fine. इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट, एक चीज याद रखना है, जब आप न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर क्रिएट करते हो, then you are getting column and measure. But if you create a field parameter, then in that case you are going to get only one column. मेजर क्रिएट नहीं होता फील्ड पैरामीटर के केस में, बट वो क्रिएट होता है न्यूमेरिक रेंज में, बिकॉज न्यूमेरिक रेंज एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई मेजर गिव्स यू अ स्केलर वैल्यू, एंड you wanted to use that particular selected value in your logic, that's why you creating a numeric range, इसीलिए वो मेजर वहाँ पे क्रिएट होता है। और जो फंक्शन यूज करते हैं सेलेक्टेड वैल्यू, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज यूज फॉर वट एवर आपका मेजर है। यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मंथ नेम का स्लाइसर है, अभी मुझे मंथ नेम के स्लाइसर्स में जो वैल्यू यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू एज अ आउटपुट चाहिए। सो इन दैट केस आई एम सिंपली क्रिएटिंग वन मेजर यूजिंग सेलेक्टेड वैल्यू। सो हम लेट्स से मेजर का नाम है मेरे पास सेलेक्टेड मंथ, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ मेजर को, जो वैल्यू मैं स्लाइसर में सेलेक्ट कर रहा हूँ उस वो वैल्यू मुझे चाहिए। सो आई एम सेइंग सेलेक्टेड वैल्यू, सी दिस इज द फंक्शन सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू में वो कॉलम नेम पूछेगा, कॉलम नेम उस मंथ का जो आपने स्लाइसर बनाया है वो कॉलम आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहाँ से लिया है, वो कैलेंडर डिम के मंथ नेम से लिया हुआ है, राइट। सो दिस इज माय selected value, so I'll simply say enter. Now if I drag this measure selected month over here in the screen, you can able to see it gives me some values. It gives me April month, which is selected in this particular slice. If I change to the February, it gives me that value. So that's what this selected value functions do. It gives you whatever columns you pass in that particular expression कि इस column के अंदर की selected value दो। अगर वो आपने स्लाइसर के तौर पे यूज़ किया है तो आप जो वैल्यू स्लाइसर्स में सेलेक्ट करोगे वो वैल्यू आपको एज आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सबको क्लियर है ये ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके फाइन, विल मीट टुमारो।